Hello, ma'am Dhruvi. So, what is the meaning of that? Hi, Gurnoor. Hi, Somesh. I think that is Dhruvi. Hi, everyone. Good afternoon, and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by An Academy. And I am Vaishnavi, your English educator who who does the analysis. So, it's a fine Monday morning. Sorry about that. Uh, mm, Although I don't look a little fine, I'm sorry about the start. It has been a little shaky. But we have a ton of words today. I mean, the number of words that we are going to be doing today. Vocabulary list is too much, and good words, all good words. So I've purposely taken the editorial जिसमें vocabulary थोड़ी अच्छी थी, so that we can get familiarized with these words and move on with it. Okay. These are very, very good words. So let's dive right into it. So we're already running late. Let's see, Somesh. I will inform about that in the group कि आज जो session होगा उसमें कहाँ से कहाँ तक vocabulary होंगे, and you will get ample of time to prepare for it because uh, the quiz will be at 7 p.m. Okay, so I will let you know way beforehand as to when and um, कहाँ से कहाँ तक vocabulary आएंगे. Okay, I hope you're excited for the quiz today. Special quiz today. Okay. So if you have not subscribed to my Telegram channel yet, please do subscribe to my Telegram channel. It's called Academy underscore Vaishnavi underscore CLAT. Let's get started with the words. I hope you can see the words. Bonjour, bonjour, bonjour Ravneet, and bonjour Hivan. Yes, greetings and salutations. Hivan, times are changing. Too many greetings and salutations. Bonjour, greetings, salutations. Hmm. Okay. All right. So the first word that we have is conjure. Okay. Conjure. I'm sure you must have watched this movie Conjuring. So conjuring has come from the word conjure, which is verb. Okay. Oh my God, what is wrong with that pen? Just 1 second.
Okay. Somesh. Mm, what is happening? Okay. Finally. All right. I'm so sorry. I'm so sorry, everyone. I'm so sorry. Yes. All right. So conjure का मतलब क्या होता है? Conjure is the first word I was really I thought things are going south today. किसी की screen I always search for GTA games. I have no games. I have zero games. Zero games. Okay. So conjure का मतलब क्या होता है? To make something appear by magic or as if by magic. Okay. तो ऐसा लगता है something that is he conjured the pen out of nowhere, or he conjured the board out of nowhere, or he conjured the magic cards out of nowhere. That means कि ऐसा लगता है कि जादू से किया गया है. Okay. Something that has been done by magic. Okay. That is to conjure. Okay. Something that is done by magic. Okay, magic से appear करवाया जाता है, या it is something that looks like it is magic. Okay, catharsis is a word हमने पहले भी किया है, and it is a very high frequency word. Okay, catharsis का मतलब क्या होता है? The process of releasing strong emotions. Okay, by venting it. Okay, through a particular activity or experience, such as writing or theater, in a way that helps you to understand those emotions. Okay, so catharsis is basically, let's say आपको बहुत गुस्सा आ रहा है. Okay, so when you go to these um places जहां पर you are allowed to break stuff. Okay, you get a room and you get a bat with which you are, or a hammer, or some sort of uh, a big tool with which you can smash and break stuff, and that is your way of letting out emotions. Okay, a lot of people use punching bag to have a cathartic experience. Okay, so catharsis is basically any sort of strong emotion. It is not necessarily anger. कोई जरूरी नहीं है कि anger के बारे में ही बात कर रहे हैं. कोई भी strong emotions के बारे में बात कर सकते हैं. उसको इसको ऐसे एक्टिविटी से रिलीज करना है उसको, जिससे यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट. ओके, एक्सप्रेस इट. ओके, so means I don't get time with I used to play games, but now I don't have time because with reading a lot of novels and then taking classes, I really don't get time. So Mish, sorry to disappoint you, buddy. No time to play games. All right, then we have diversion. Okay, diversion का मतलब क्या होता है? Diversion is something that takes your attention away from something else. Okay, so to divert attention. Okay, divert is the verb form. All right, so diversion is the noun form. So divert your attention, divert something. Okay, so this was done as a diversion. मतलब आपको ध्यान भटकाने के लिए किया गया था ये कार्य. Okay, so that is diversion. This is a very easy word. Okay, white paper का मतलब क्या होता है? White paper is an authoritative report that provides information about a specific issue. Okay, Ravneet, same here. Same here. I used to
My bed was the one that used to face a lot of my cathartic experience. Okay. And then I'll rearrange it after I had that experience. After I'm done venting my anger, I used to rearrange everything after throwing everything in the air. And but I did not get used to meditation that soon. So good job, congratulations, you have at least something which can hold it together, hold you together. So good job. Meditation is a very nice way of remaining calm and having a quiet mental space. Okay. White paper. White paper is a noun. Okay, this is a new word. Okay, generally ये यूके से लिया गया है ये term. जो भी ऐसा पेपर होता है, ऐसा रिपोर्ट होता है, which is an authoritative report. Okay. Any report that is an authoritative report. One second. रिमोट से लेकर शोपीस तक सब टूटा है. You have no idea. The things I have broken, and especially the things that I liked so much. Okay, I used to definitely go for that. The things that I loved. um, ठीक है. Botched is the next word. Okay, so white paper का मतलब क्या होता है? Authoritative report that provides information about a specific issue. Okay, कोई भी specific issue पे कोई report authoritative report जो जारी की जाती है, that is a white paper. Okay. Then we have botched. Okay. Botched is an adjective. ed आने के बावजूद it is an adjective. Okay. So this whole report is botched. Okay. अगर हम किसी task के बारे में बात कर रहे हैं या किसी work के बारे में बात करें, if it is botched, that means it is carried out badly or carelessly. Okay. Something that is botched is carried out badly or carelessly. Okay. गुरनूर चला गया क्या? Okay. Anywho, so Manish, how do you know he did not complete GTA 5? And that shouldn't be your concern right now. Your concern has to be this year's CLAT. Right? Right, everybody? Okay. Yeah, GTA 6 ka, I saw the trailer of GTA 6. Looked quite real. Hmm. Anywho, complete Florida scenes or something. Okay, next one is fragile. Okay, fragile. Okay, fragile is the UK pronunciation, fragile is the American pronunciation. So fragile is an adjective जिसका मतलब होता है अगर किसी object के बारे में बात करते हैं तो बहुत delicate object. Okay, easily broken or damaged. Okay, that is Ravneet. All right, so that is fragile. Fragile is अगर किसी object के बारे में बात करें तो it is something that is easily broken or damaged. Okay. Misappropriation. Okay, it has come from misappropriate. Misappropriate is always related to money. Okay. पैसे चुराना या embezzlement. ओके, इम्बेजल करना, पैसे इम्बेजल करना और मिसअप्रोप्रिएट करना. ओके, these are the same. Okay, so misappropriation is the act of stealing something that you have been trusted to take care of and using it for yourself. Okay, so अगर आपको कोई चीज दी गई कि इसको संभाल के रखो, इस आपके कंपनी की तरफ से आपको लेट्स से 50 लाख रुपए दिए गए कि 50 लाख अभी हमारा बैकअप है, इसको संभाल के रखना, एंड यू आर द CFO, chief financial officer or something, and then you start stealing from the company. Okay, making
and use it according to the company's need. Okay, ऐसा बोला गया है और आप अपने पर्पस के लिए उस फंड को यूज करने लगे. So that is misappropriation of fund. Okay, तो आप पे ट्रस्ट किया गया, आपको पैसे दिए गए कि कंपनी के लिए यूज करना और आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो that is misappropriation, that is embezzlement. Okay, which is not a good thing. All right, so these are very nice words, all these words: botched, fragile, misappropriation, blunder. Blunder का मतलब क्या होता है? Yes, Ravneet. I saw my brother also playing when I was um, young, and I've just played San Andreas. So, played, mostly watched, less played, but mostly watched him play. I used to just sit next to him and watch him play. Anywho, ब्लंडर. ओके, ब्लंडर का मतलब क्या होता है? सीरियस मिस्टेक. कोई भी सीरियस मिस्टेक को हम क्या कहते हैं? ब्लंडर कहते हैं. यूजुअली कॉज बाय नॉट टेकिंग केयर और थिंकिंग. ओके, जब आप सावधानी नहीं बरतते, आप जानबूझ, आप केयरलेस हो जाते हो, ओके, तब आपसे कोई मिस्टेक होती है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लंडर. ओके, आप केयरलेस हो गए और उसकी वजह से कोई मिस्टेक हो गई, तो दैट इज अ ब्लंडर. ओके, so this is also a very nice word. Then we have odd. Okay, odd is an adjective. Odd, ed, again it has got ed, but it is still an adjective, which is a feeling of great respect, sometimes mixed with fear or surprise. Okay, so I'm awed by the by this attention of yours. Okay, तो मतलब you are shocked, okay, with the great respect that you have received, especially with sometimes with mixed with fear or surprise. Okay, so you don't know, you never expected it, and you are fearing that something is more is coming after this. Okay, so that is feeling awed. Okay, all right, these things are cheap dopamine, but I am taking these dopamine since childhood. What dopamine? Or with GTA 6 trailer. Or the you're talking about games. Yeah, yeah. Cheap dopamine. Laptop games. Okay. All right. Now this is the next set of word. Okay. Sentences, everybody. Sentences. I don't see sentences. Only Somesh made one. I'm awed with GTA 6 trailer, and that is absolutely correct. Okay. But I like this fact that you have such awareness, Somesh, that it is basically cheap dopamine. Wow, I'm awed by this. Okay, then we have stagnant. Stagnant हम generally water के लिए use करते हो कि stagnant water, ponds have stagnant water. Okay, so stagnant water is basically रुका हुआ, still पानी. Okay, so not growing or developing when we are talking about the advancements. Okay, that is stagnant. Okay, तो मतलब grow नहीं कर रहा है, advancements या develop नहीं कर रहा है, कोई development या growth नहीं होना. Okay, that is stagnant. Again, it is an adjective. Okay, then we have undertake, undertook, undertaken. Okay, so this is a verb. Okay, which means to do or begin to do something. Okay, to do or to begin to do something. Okay, to do or begin to do something, um especially something that will take a long time or be difficult. Okay, तो undertake a responsibility. Okay, मतलब ऐसा चीज शुरुआत करना, ऐसे चीज की शुरुआत करना जो बहुत लंबा चलने वाला. Okay, like I have undertaken CLAT preparation. Okay, so you know that it is going to go on for a long time, you know that it is going to be a little difficult, but you have started
preparing for it, okay, preparing for CLAT. So that is a job that you have undertaken, okay. Then we have invoke बहुत बार हमने देखा है, but let's just take it as a new word. Invoke करना मतलब is to make someone have a particular feeling or remember something, okay. So invoked a feeling of this, okay, or invoked this emotion in me, okay. So basically, or invoke that the idea of, okay. So अगर कोई invoke कर रहा है कोई चीज आप में, okay, that means आपको recall करवा रहा है कोई चीज, okay, something that you remember suddenly, या कोई feeling आपको वापस से आ रही है, okay. Invoke is generally used to call upon a god, that is also to invoke, okay. Invoke a deity, okay. But यहाँ पर use हो रहा है कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपको याद दिलाने के लिए कुछ होती है, या कोई पर्टिकुलर फीलिंग आपके अंदर लाती है, ओके. सो पर्टिकुलर फीलिंग, इट इन्वोक्स अ पर्टिकुलर फीलिंग इन यू, ओके. सो दैट इज अ वर्ब फॉर्म, ओके. Again, you can change it to invoked, invoking, invokes, okay. Posterity, okay. Posterity is a new word, okay. Posterity is the people who will exist in the future, okay. Posterity, okay. So posterity is a noun which means the people who will exist in the future, okay. जो अभी exist नहीं करते but they will exist in the future, okay. That is posterity, okay. Belie is the next word, another one important word. Verb form है to show something to be false or to hide something such as an emotion, okay. So ऐसा दिखाना कि कोई चीज गलत है, ओके, कोई चीज फॉल्स है, या जानबूझकर कोई चीज को हाइड करना, स्पेशली एन इमोशन को, ओके. अगर आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशन को, सो यू आर बिलाइंग योर इमोशंस, ओके. सो दैट इज अ मीनिंग. और यू कैन से कुछ झूठा दिखाना, ओके. जैसे मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर आप अंदर से एकदम ही दुखी हो एंड यू आर स्टिल प्रिटेंडिंग दैट यू आर हैप्पी, ओके, दैट इज यू बिलाइंग, ओके. सो दैट इज बिलाइंग. हेलो अपूर्वा. हेलो. When I was small, not little but child. So you don't say small, okay. When I was little, you say, okay. When I was little, uh when I was little, that's it. You don't have to mention child, okay. When I was little, my brother had undertaken, okay, had undertaken, past की बात करें, had undertaken a responsibility of bringing best of the best futuristic games for me. Had undertaken a responsibility of bringing the best of the best futuristic games for me. Very nice, Somesh. Good job. The Undertaker, I knew it. Never undertakes, choke slams. Okay. Good job. Hello, Mehek. Hello, Aastha. And hello, Apurva. ऑलराइट, तो इस पेज में हमने कौन कौन से वर्ड देखे? कॉन्ज्योर देखा, कैथारसिस देखा, डाइवर्जन, व्हाइट पेपर, बॉच्ड, फ्रैजाइल, मिसअप्रोप्रिएशन, ब्लंडर एंड ओड. स्टैग्नेंट, अंडरटेक, इन्वोक, पोस्टेरिटी, इम्ब्रेस इज द नेक्स्ट वर्ड, ओके. इम्ब्रेस का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा. इम्ब्रेस का मतलब होता है कोई चीज को एक्सेप्ट करना, एंड स्पेशली एंथुजियास्टिकली, ओके. सो I embraced the consequence with open arms, okay. मतलब मैं जो भी consequence आने वाला था उसको खुशी खुशी से गले लगाने के लिए तैयार थी, okay. So embrace करना is to basically accept something, okay. और embrace someone is to किसी को गले लगाना is to embrace someone, okay. Basically give someone a hug, okay. So that is embrace when you do it to people, and embrace something is to accept something, okay. Then we have nuance, okay. Nuance is a very slight difference, okay. Nuance का मतलब क्या होता है? एक बहुत छोटा सा difference, slight difference in appearance, meaning, sound, etc. Okay. Nuance का मतलब होता है very slight difference in appearance, meaning, sound, etc. is a nuance, okay. बहुत छोटा सा difference, okay. बहुत थोड़ा सा difference, okay. So nuances are very small differences, okay. Very minute differences, okay. ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस इज एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर को ऑर्डिनेंस कहते हैं, ओके. देन वी हैव बैक ट्रैक करना मतलब रिट्रेस, अपना स्टेप्स को रिट्रेस करना, ओके.
So when you let's say you go to the wrong track, okay, आप गलत जगह आप हाइक पे निकले हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग हाइक करते करते आप लोग गलत ट्रैक पे निकल जाते हो। उसके बाद आपको लगता है कि आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है रोड सा। सो लेट्स बैक ट्रैक, ओके, लेट्स बैक ट्रैक मतलब लेट्स रिट्रेस आवर स्टेप्स, ओके, जैसे आए हैं, लेट्स रिट्रेस आवर स्टेप्स एंड सी इफ वी गॉट लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन, ओके। Okay. You can't have a catharsis, okay? Not be a catharsis. You never be a catharsis. You have a catharsis, okay? My life was stagnant until one day she asked me a question in an exam. Very nice. Oh, Somesh, first time I'm seeing you writing something romantic or close to romantic. Ravneet, you can't have a catharsis at this moment. You know, we are all in a fragile state, and your tantrums can be a perversion, and we can't afford that. Can be a perversion, and we can't afford that. You saw how that power conjured a knife so close to your throat. Please be careful, full stop. Please be careful about every nuance. Remember, full stop. Remember, it is gonna try to invoke your memories to target your fears. Very nice. Do not surrender. Okay, she remembered her mother's words and took a step back uh, and backtracked her memories to those memories and backtracked her uh, thoughts to those memories. Okay, backtracked her thoughts to those memories to target, oh sorry, to those memories that had been stagnant for years now. Okay, for years now. She knew she can't belie them anymore. It was when she felt, it was then she felt, not when, it was then she felt a hand on her shoulder. Very nice, Ravneet. Good job. Marvelous. Spectacular. Good job. You can really tell a story. Hello, Chahat. Hello. Hi. Hi. अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं आता था. What? Okay. ठीक है. ठीक है, whatever you want to say, but there was a heart drawn right after that. So I know it was remotely, even like slightly, but slightly romantic. It was, Somesh. Look at this statement. My life was stagnant. Mhm. Until one day she asked a question in the exam, and then your life started moving. It had momentum, right? So it is definitely romantic, Somesh. Don't lie. Okay. Yeah, Ravneet, but don't take help of Grammarly and all those, because you need to know. Okay, you need to know what would be the correct grammar, or where would you put the correct, what would be the correct place to put a punctuation mark. Okay, you should know that. Okay, so do not rely complete on Grammarly. Okay, because even Grammarly cannot make certain changes. Okay, in your speech, where a certain word has to be something else. Okay,
Homonyms may generally grammarly goes wrong. Okay, so do not completely rely on grammarly. Okay. Then we have hindsight. Hindsight का मतलब क्या होता है? Understanding of a situation or event only after it has happened or developed. Okay, so कोई भी situation को समझना जब वो हो चुका है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करना, that is hindsight. Okay, so this is a noun which is very much used to talk about what went wrong, या कोई चीज हो चुका है and then you are trying to understand how did it take place or how did it happen. Okay. Then we have bungle. Okay, bungle is another word. जैसे Chernobyl, whatever Chernobyl you want to say it. So people always there was a series also that was hindsight of Chernobyl. Okay, so how did the um, whole nuclear power plant exploded? So that is the hindsight of it. Okay. Character like Steve Harrington. Hmm? Deeper Whitey was like Modi Sarkar ki guarantee. When Steve, okay, when Steve threatened Dustin that he will beat him hard, Dustin said, "Not cool." I embraced that. Steve realized that it was not cool. Yeah, beating a child is not good. Also, more if you are character like Steve Harrington. Gosh, Somesh, कहाँ से आपका? Okay, but you did not. I embrace. You cannot say. You should say. And Steve embraced the fact that it was actually certainly not cool. Okay. All right. Bungle का मतलब क्या होता है? Carry out a task clumsily or incompletely. Okay. Bungle something is to basically कोई चीज को किसी तरह से कर देना. Generally, when mothers ask their children to do something, their child to do something, they generally bungle it up. Okay, they bungle it hard or bungle it bad. Okay, so कोई भी task ऐसे carry out करना है जिसमें या तो किसी तरह से बस कर देना या तो incompletely कर देना. Okay, or it is the husbands, either it is the children or it is the husbands. Auntie. So let's look at the words that we have done. So we have done stagnant, undertake, invoke, posterity, belie, embrace, nuance, ordinance, backtrack, hindsight, and bungle. ये नहीं हो पाएगा. Carry out a task clumsily or incompletely. All right, that is bungle. Okay, so these are the words that we have seen: conjure, catharsis, diversion, white paper, bosh, fragile, sorry, misappropriation, blunder, oat, stagnant, undertake, invoke, posterity, belie, embrace, nuance, ordinance, backtrack, hindsight, and bungle. So, Unacademy Law Admission Test is happening every weekend 4 p.m.
and it is a simple test of 50 questions in 60 minutes that you have to answer. You can get 90% scholarship in these tests, okay? And top 5 rankers will also get, additionally, they will get gift vouchers worth 2,500 rupees. All right, Restart is an ultimate test series pack for other law entrance test 2024. Again, the selling price is 5,555 only, जिसमें आपको 33 full length mock test मिल रहे हैं for SLAT, MHCET, LSAT, CUET 5 year, CULEE and AILLET. Okay, and test के बाद you will get detailed paper analysis as well post test. Saturday's Spectre is Unacademy का face off हो रहा है, जिसमें it's a battle of wit and wisdom. Okay, Aditya Rai sir will have a face off with Vijendra Singh sir. Manu Mishra sir will have a face off with Somil sir, and there will be a surprise celebrity educator who will have a face off with Raghavendra sir, and this is happening every Saturday. So do not forget to watch. Masterclass 2024 is a road to your dream NLU, where you get a special class series where our top educators share insight on their alma mater and their unique experience of studying at prestigious NLU. So all these educators will be sharing their personal experience, okay, with you. Comprehensive batch is a batch for CLAT, ALET, SLAT, MHCET and CUET 2025. Comprehensive batch जिसमें मैं ले रही हूँ English language. You can use my code Vaishnavi 10 to enroll in this batch and get an additional discount, maximum discount, by using my code Vaishnavi 10. Target NLU is a batch for droppers batch for CLAT 2025. Again, you can use my code Vaishnavi 10 to enroll in this batch. CLAT आइकॉनिक प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम में, और प्लस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? प्लस इज अ बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड विद, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, रेज अ हैंड फीचर मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, एक्सेस टू ई नोट्स मिलता है. ये सारा कुछ आपको आइकॉनिक में मिलता है. यू गेट एवरीथिंग इन आइकॉनिक, प्लस प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, वन ऑन वन मेंटरिंग सेशंस मिलते हैं. All right, so pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Too many words not good for us, guys. I don't like to jump to conclusion, but someone said I could do it this year because it's a leap year, and I like that. Okay, well, do what this year? Vijendra sir, Dhasu sir lage, okay? For sure, if you are doing it from now, okay, if you are starting from January से आप जितने भी words देख लेंगे और हर दिन आप attend कर रहे हैं ये sessions, तो yes, definitely it is enough, definitely. Okay, and अगर आप ALET में देखो तो ALET में भी you are not getting vocabulary questions straight away. It is contextual vocabulary, so it is definitely enough. Okay, so pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Conjuring a catharsis, okay, that is the title given. Okay, अब conclusion देख लेते. Conclusion क्या दिया हुआ है? The white paper on the economy is a political diversion. Okay, ये जो white paper जो दिया गया है, जो report दिया गया है economy के ऊपर, ये political diversion है. Okay, distract करने की कोशिश की गई. Okay, this is the conclusion that the author has reached to. किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, ये सब के बारे में डिटेल अब हम देखते हैं. बिफोर दैट लेट्स लुक एट द मेन आइडिया. ओके, so the finance ministry in a white paper, okay, so the finance ministry in a white paper on the economy placed in parliament
सो व्हाइट पेपर रिपोर्ट किसने दिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया। किसको दिया? पार्लियामेंट को दिया। ओके, किस पे दिया? इकोनॉमी पे दिया। हैज अक्यूज्ड, और इन्होंने इस रिपोर्ट में किसको अक्यूज किया? मनमोहन सिंह लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए ऑफ 2004 टू 2014 का जो इनका टेन्योर था, ऑफ बॉचिंग द इकोनॉमी। ओके, इन्होंने इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें व्हाइट पेपर रिपोर्ट दिया है, व्हाइट पेपर दिया है जिसमें इन्होंने अक्यूज किया है यूपीए गवर्नमेंट को, ओके, मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट को, कि इन्होंने इकोनॉमी को बॉच कर दिया था। ओके, and this is what the entire editorial is about. Okay, so this becomes the main idea. Okay, इसी के बारे में the author is going to discuss in details. Okay, अब देखो, द मिनिस्ट्री हैज सॉट क्रेडिट फॉर नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट्स रिपेयर एंड रिफॉर्म जॉब्स सिंस 2014 फॉर लिफ्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेजाइल फाइव 10 years ago. Okay, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्रेडिट मांगा है। ओके, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू शो कि कैसे इकोनॉमी बहुत ही बर्बाद थी 2014 तक, और जब नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट आया एनडीए, ओके, उसके बाद जो रिफॉर्म्स शुरू हुए 2014 से, वही लिफ्ट किया इंडिया को टू वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहां से? फ्रेजाइल फाइव में था ये इंडिया का स्टेट 10 साल पहले, और एनडीए गवर्नमेंट ने इसको, इंडिया को उठाया है। ओके, इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। ओके, ऑलराइट, it listed 15 high profile UPA scams. दिस वॉज द डिटेल। ओके, यहां तक डिटेल था। अब इसका, इसमें क्या क्या था इस रिपोर्ट में, उसके बारे में डिटेल में बता रहा है, इलेबोरेशन है। हाई प्रोफाइल, इसमें 15 हाई प्रोफाइल यूपीए स्कैम इंक्लूड किया गया है, जिसमें कोल, 2G स्पेक्ट्रम, द कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड इवन अ 44 crore मिसअप्रोप्रिएशन केस इन जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट बोर्ड। ओके, ये सारे इंक्लूडेड है, ये 15 हाई प्रोफाइल स्कैम्स में, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए स्कैम्स में, ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिनका मेंशन है उसमें। ओके, आज बिफोर दिस द कांग्रेस लेड रिलीज्ड अ ब्लैक पेपर ऑन 10 years of अन्याय काल, ओके, एरा ऑफ इनजस्टिस। ओके, और कुछ ही देर पहले, इसके इसके कुछ ही देर, ये जो व्हाइट पेपर इन्होंने निकाला, उसके पहले कांग्रेस ने रिलीज किया था एक ब्लैक पेपर। ओके, सो व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ओके, जिसमें उन्होंने बताया 10 साल का इनजस्टिस किया हुआ, ओके, अन्याय काल उन्होंने मेंशन किया था इसको, तो उसके बारे में मेंशन किया था। ओके, इट हाईलाइट्स दिस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ब्लंडर्स। ओके, और इसमें क्या, इस ब्लैक पेपर में क्या था? इस गवर्नमेंट का जितना भी ब्लंडर्स था, ओके, जितने भी इन्होंने गड़बड़ किया है, सच एज डिमोनेटाइजेशन, समथिंग दैट द व्हाइट पेपर इज साइलेंट ऑन। ओके, और व्हाइट पेपर में इसका कोई मेंशन नहीं। ओके, व्हाइट पेपर में इसका कोई मेंशन नहीं कि डिमोनेटाइजेशन वाज सच अ ह्यूज ब्लंडर, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है व्हाइट पेपर में। The old GST regime, okay, जो शॉकिंग जीएसटी regime था, the unemployment situation, okay, unemployment situation with stagnant wage growth, okay, unemployment situation, और जो growth भी है वो stagnant है, रुका हुआ growth है, किस चीज का? wage का। okay, farmers distress, and high inflation despite crude oil price being lower than in the UPA times। okay, तो इन्होंने भी पूरा अच्छे से दिखाया है, ओके, कि ये सारी पूरा अन्याय काल, इनजस्टिस क्या कहाँ कहाँ हुआ था। इन्होंने एग्जाम्पल, अगेन टू नेम अ फ्यू, दैट द कांग्रेस हैज submitted this report, okay, where all the blunders are being spoken about or pointed out of the एनडीए, ओके, एनडीए regime का। ओके, तो इसमें से कुछ कुछ है, डिमोनेटाइजेशन,
जीएसटी रेजीम, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ, फार्मर्स का डिस्ट्रेस, उसके बाद हाई इन्फ्लेशन, डिस्पाइट क्रूड ऑयल का प्राइस लो है उसके बावजूद हाई इन्फ्लेशन हो रहा है. ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम questioned the UPA's extra constitutional governance system and Dr. Singh's failure to undertake reforms that were still pending after the 1991 liberation rush, and said this government delivered on those reforms and beyond. Okay, so basically अब coming back to this government, okay, इन्होंने क्या क्या point out किया है? इन्होंने point out किया है किस किस चीज पे यूपीए को क्वेश्चन किया? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सिस्टम पे क्वेश्चन किया, और डॉक्टर सिंह फेलियर टू अंडरटेक, उन्होंने नहीं ये रिफॉर्म को अंडरटेक किया था जो पेंडिंग था 1991 लिबरेशन रश से, और ये बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने बस ये अंडरटेक ही नहीं किया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसको डिलीवर भी किया और उससे ज्यादा भी किया. ओके, she even invoked cases, she even recalled cases from the 1950s and 1970s to argue that corruption runs in Congress's DNA. Okay, और इन्होंने 1950 और 1970 के केसेस भी लिए as an example to show कि कांग्रेस के DNA में है corruption. Okay, the government's assertion that the white paper will serve as a record for posterity for India's youth to know the efforts it took to undo the UPA's era damage and restore India's glory belies its anxiety that the young may not be adequately convinced about recent years' outcomes. Okay, so basically ये गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर किस लिए सर्व किया? ये बोल के सर्व किया कि ये एक रिकॉर्ड होगा. ओके, ये व्हाइट पेपर रिपोर्ट जो है ये एक रिकॉर्ड होगा कि आने वाले जो इंडिया के यूथ है वो देखेंगे कि कैसे यूपीए ने डैमेज किया था इंडिया का ग्लोरी, इंडिया का रेपुटेशन, और कैसे एनडीए गवर्नमेंट ने इसको उभारा है इस पूरे कश्मकश से. ओके, और ये क्या दिखा रहा है? बेसिकली ये दिखा रहा है इनकी एंजाइटी. ओके, द ऑथर इज सेइंग, यहाँ से द ऑथर इज टॉकिंग सेइंग कि ये क्या दिखाता है एक्चुअल में, कि इनका एंजाइटी दिखाता है कि हो सकता है कि यूथ नहीं देखे इसको, जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना कश्मकश से गुजरा है ये, और कितनी अच्छी, कितनी उन्नति की है एनडीए गवर्नमेंट ने, ये शायद यूथ नहीं देख पाएंगे. उसकी एंजाइटी दिख रही है इनके इस स्टेप से. ओके, दैट मे एक्सप्लेन, और इसके वजह से हम इसी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो क्यूरियस एब्सेंस ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ है, ओके, इसमें से इसी वजह से हो सकता है कि ये जो यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ भी नहीं दिखाया गया है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी नहीं दिखाया गया है, यूपीए एंड एनडीए ईयर्स के बारे में ये सारे डेटा नहीं दिखाए गए हैं फ्रॉम द डेटा लेडन पेपर विच इवन कंपेयर्स वेस्ट वॉल्यूम्स प्रोसेस बाय द अर्बन लोकल बॉडीज. ओके, ये सारे कंपैरिजन जो यूपी और एनडीए गवर्नमेंट में कंपैरिजन हुआ है, ये सारे के बारे में नहीं इन्होंने इंक्लूड किया. ओके, जानबूझ के ये सारे डेटा एब्सेंट है. ओके, जीडीपी ग्रोथ के डेटा एब्सेंट है, और वेस्ट वॉल्यूम्स प्रोसेस्ड. ओके, वेस्ट वॉल्यूम कितना प्रोसेस हुआ यूपीए गवर्नमेंट में और एनडीए गवर्नमेंट में, ये सब भी दिखाया अर्बन लोकल बॉडी से, लेकिन ये सारे नहीं इंक्लूडेड है. द पेपर आर्ग्यूज दैट यूपीए फेल्ड टू डिलीवर जीएसटी एंड यूज आधार इफेक्टिवली, बट द एनडीए एम्ब्रेस्ड एंड डिलीवर्ड ऑन बोथ. ओके, तो और क्या दिखाता है ये पेपर? व्हाइट पेपर दिखा रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट कैसे फेल कर गया था जीएसटी को डिलीवर करने में और आधार को इफेक्टिवली डिलीवर करने में, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने इसको गले लगाया, एम्ब्रेस किया और डिलीवर किया दोनों में. ओके, जीएसटी और आधार दोनों में. ओके, that a few BJP states, including Gujarat, had reservations about GST and Aadhaar at the time. It is a most nuance, okay, is a lost nuance, okay. और उस टाइम कुछ states जैसे गुजरात और
कुछ स्टेट्स, बीजेपी की स्टेट्स ओके को इसके बारे में रिजर्वेशंस थी ओके, आधार और जीएसटी दोनों के बारे में रिजर्वेशंस थी, ये छोटे छोटे डिटेल्स को भुला दिया गया है ओके। द एनडीए had a resounding majority twice but has yet to find a conciliant approach to undertake critical pending factor market reform such as on land and ordinance approach was abandoned in 2015 and labor new codes are yet to kick in while it had to backtrack on farm sector reforms okay। so यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एनडीए को 2 बार मेजोरिटी मिली ओके, 2 बार उन्होंने बैक टू बैक गवर्नेंस मिली उनको, लेकिन अभी तक ओके, अभी तक उनका कंसीलियंट अप्रोच ओके कुछ कुछ क्रिटिकल पेंडिंग फैक्टर्स पे नहीं हुआ है, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लैंड लैंड के रिफॉर्म्स पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था 2015 में, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ, लेबर के बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है, न्यू कोड्स अभी तक किक इन ही नहीं हुए हैं, और इनको बैक ट्रैक करना पड़ रहा है फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स पे ओके। सो दीज आर द फ्लॉज दैट दे हैव पर्पसली मिसलेड और लेफ्ट आउट ओके। द यूपीए The UPA was a rainbow collision that navigated tricky terrains such as a telecom and insurance, FDI liberation, and the India's US civil nuclear deal. Okay, अब यूपीए ने क्या किया था, ये ट्रिकी सिचुएशंस को, ट्रिकी टेरेन्स को ये इन्होंने मनूवर किया था, जैसे टेलीकॉम और इंश्योरेंस, एफडीआई लिबरेशन में, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में इन्होंने नेविगेट किया था गवर्नमेंट को ओके। सो इंडियाज रिफॉर्म जर्नी हैज बीन मार्क्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑन पास्ट एफर्ट्स ओके। तो इंडिया का जो जर्नी है ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द ऑथर इज सेइंग अगेन कि इंडिया का जो रिफॉर्म जर्नी है, जो रिफॉर्मेशन हुए ओके इंडिया में, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट ओके, ये जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है, ये पास्ट वाले गवर्नमेंट के काम पे ही बिल्ड के किया गया है, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं ओके। और ये ऐसा नहीं कि पहले वाले सारे एफर्ट को इन्होंने खत्म करके और नए नए एफर्ट लाए हैं ओके, ऐसा नहीं है ओके। सो इंडियाज रिफॉर्म जर्नी हैज बीन मार्क्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑन पास्ट एफर्ट्स रादर देन रिवर्सिंग कोर्स ओके। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कोर्स लिया था पिछले वाले गवर्नमेंट ने, उसको वापस से उस कोर्स पे आके वापस से आके दूसरा कोर्स लिया है, ऐसा नहीं है ओके। इन हाइंडसाइट मेनी अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, अगर पहले के रिकॉर्ड्स देखे गए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मे बी कंसिडर्ड मिस्ड और बंगल्ड ओके। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स थे जो इन्होंने मिस भी कर दिया है या उनको कंप्लीटली बेकार कर दिया ओके। The paper seems to be an attempt to temper voters' higher expectations from a government with a majority mandate. Okay, तो ये basically ये जो पेपर है, किस चीज के attempts को दिखाता है, दर्शाता है कि वोटर्स के हाई एक्सपेक्टेशन को उसके साथ ये टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। बट अ पॉइंटेड फिंगर ओके, पॉइंटेड फिंगर leads to 3 pointing right back okay। so the author is saying कि अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो 3 फिंगर आपके ऊपर भी वापस से पॉइंट आउट कर रही है ओके। इट इज नो सरप्राइज दैट द व्हाइट बिगॉट ब्लैक ओके। सो इट इज नो सरप्राइज, यहाँ पर व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बारे में बात कर रहा है, मेटाफोरिकली बात कर रहा है, बिगॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ बिगेट ओके। And what is the meaning of beget? कश्मकश bring it back
Fireball. What is the meaning of beget? Anyone? This begets that. That means brings about. Okay. So something that causes something, okay? So white brings about black, okay? So that's why the author is using it कि ये जो white paper report है, okay? So basically trying to say that good also brings the bad side, okay? If you are talking about the good side, it also brings with it the bad side, okay? The black, okay? Fetch, call for, yes, brings about, okay? So that's what it is trying to say. Metaphorically use किया गया है इसको, इस line को. The author has used a lot of metaphors and sarcastic comments in this entire editorial. Okay, so what would be the tone of the editorial? Biased, okay, yes. Also talking about कि black report दिया था किसने? यूपीए गवर्नमेंट ने ब्लैक रिपोर्ट दिया था एंड उसके ऊपर व्हाइट रिपोर्ट इन्होंने दिया था. ओके, सो basically it is like a pun as well because it is talking about more than one thing. Okay, so the author has used witty remarks. Okay, witty remarks to talk about something. Okay, sarcasm, sarcastic. Okay. Mhm. And you can say analytical. All right, these can be the tone of today. All right, so that is it for today. Thank you everyone for attending the session. I will see you in the next class. I will soon be posting the schedule for today that I have not done it yet. So don't worry, it is going to come on soon. All right. Bye everyone. Take care. Sayonara. Auf Wiedersehen. Au revoir. Bye bye.